everyone, this is our day 2 in Hanoi, Vietnam and आज हम लोग जाएंगे थोड़ी साइट सीइंग के लिए एंड पहले मुझे एक शूज़ ख़रीदने हैं क्योंकि ये जो शूज़ मैंने पहने हैं चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है एंड या उसके बाद हम जाएंगे मे बी टेम्पल ऑफ लिटरेचर एंड देन वील ग्रैब अ कॉफ़ी एंड देन लंच। तो या आज अच्छी बात यह है कि बारिश जो है रुक गई है एंड मौसम थोड़ा सा साफ़ है, तो होपफुली इट विल बी अ बेटर डे। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर बालकनी एंड या काफ़ी अच्छा व्यू नहीं है बट यहाँ पर थोड़े से आई थिंक ट्रेडिशनल हाउसेस हैं जो कि थोड़ा काफ़ी कूल लग रहे हैं। उनके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं एंड या मौसम थोड़ा बेटर है बट अब थोड़ी बहुत बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, तो अब हम निकलेंगे और वी विल ग्रैब अ कॉफ़ी एंड देन So this is a temple in the middle of the lake. The entry price was 30,000 Vietnamese dong per person, but I think it's worth it. It gives you it gives you a very photogenic area, a lot of good pictures that you can take here, and also gives a great view of the city. And yeah, definitely check out this temple if you're near the lake. I forgot the name of the lake, but yeah, do check out this temple. I think there used to be boating in this lake as well, but it must be stopped now. Yeah, overall a beautiful place for great photos and very peaceful as well.
और ये मार्केट पूरी स्ट्रीट पे फैली हुई है, काफ़ी लंबी मार्केट है। एंड या सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ चल रहा है। भागे जा रहा है, भागे जा रहा नहीं। So this market goes on and on and on. काफ़ी लंबी स्ट्रीट है और पूरी स्ट्रीट पे मार्केट लगी हुई है। They have all sorts of things that you can buy. Cà phê vấn đề với bà là
ले ली इंडियन की खुशबू। हाँ